हेलो फ्रेंड्स मु रंजीत ओडब्ल्यूएससी हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति 2022-23 सिलेबस अनुसार किछि क्वेश्चंस नहीं कि आसी इंडियन इकोनॉमी रो पार्ट 1 रे तो वीडियोटी कंप्लीट देखंतु कारण एई सब क्वेश्चंस ओडब्ल्यूएससी रे ऑलरेडी आसी सारिछि तो वीडियोटी आपन पई इंपोर्टेंट रहइबो तो चलंतु डेन नगर की स्टार्ट करिवा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज रिगार्डेड एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। वीडियोटी केवल रिवीजन पर्पज रे अछि। वीडियो भल लागिले ही लाइक करिवे, शेयर करिवे निज सांग मानक सहित एवं फर्स्ट टाइम जदि चैनल को विजिट करछंती देन सब्सक्राइब करिके निजर सपोर्ट निश्चित देबे। तार करेक्ट आंसर कोन हबो? करेक्ट आंसर हबो फाइनेंस कमीशन। करेक्ट आंसर हबो फाइनेंस कमीशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक लोकेटेड? इंडियन इकोनॉमी रे वर्ल्ड बैंक आसुनी बट इनडायरेक्टली आसुची। जदि देखिबा जदि लोन्स रे हो किबा हेल्प रे हो इंडिया वर्ल्ड बैंक रु हेल्प नौची। तार करेक्ट आंसर कोन हबो? वाशिंगटन डीसी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? या भीतर डायरेक्ट टैक्स कोटा? तो करेक्ट आंसर हबो कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स माने इनडायरेक्ट टैक्स ताले कोन? कस्टम ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स ये सब इनडायरेक्ट टैक्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स एक्ट्स एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? समस्ते जानिछे बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई। Who is the ex officio chairperson of the National Institution for Transforming India? नीति आयोग जोटा तारो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन किए? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। What is the full form of acronym ECB? A bank of the European Union countries which have adopted the euro. ECB रो फुल फॉर्म कोन? तो करेक्ट आंसर हबो यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यूरोपियन सेंट्रल बैंक। Which constitutional functionary is known as the guardian of the public purse? काहाकू कुआ जे पुनी constitutional functionary guardian of the public purse? Correct answer हबो Comptroller and Auditor General of India, CAG of India. Who is the custodian of the India's foreign exchange reserves? Custodian of the India's foreign exchange reserve तो correct answer हबो Reserve Bank of India। ठीक अछि। एजारे बहुत जन कंफ्यूज होंती सेबी आउ आरबीआई मध्य रे। हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स द 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? लीड किए करे? तो करेक्ट आंसर हबो गवर्नर ऑफ आरबीआई। इन इंडिया द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय? फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कहा द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक अछि। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी? SIDBI, Small Industries Development Bank of India, whose birth anniversary is celebrated as National Statistics Day every year in India? PC Mahalanobis. PC Mahalanobis. Who has the authority to make advances out of the contingency fund of India to meet unforeseen expenditure? का पाखे से authority अछि to make advances out of the contingency fund of India? The correct answer is President of India. Which bank acts as the lender of the last resort in India? Lender of the last resort in India. The correct answer is Reserve Bank of India. Reserve Bank of India. Which of the following is a direct tax in India? यह तो कोड़ा direct tax. The correct answer is income tax. ताले indirect tax कोना? Good and service tax, value added tax, customs duty. Clear? Next. What is the full form of BHIM in banking terminology? BHIM रो full form कोना? समझते यूज कोचे BHIM? तारा correct answer है भारत interface for money. भारत interface for money. In India, the cash reserve ratio is decided by which of the following? कहा द्वारा डिसाइड करा जाए कैश रिजर्व रेशियो? बेले क्वेश्चन एमिति भी आसे CRR रो फुल फॉर्म कोना? कैश रिजर्व रेशियो। तो डिसाइडेड बाय RBI's मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। RBI's मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KYC इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी? KYC रो फुल फॉर्म कोना? तो करेक्ट आंसर हबो नो योर कस्टमर। नो योर कस्टमर। कैश रिजर्व रेशियो CRR is the minimum percentage of a bank's deposits to be held in the form of liquid cash, gold, special drawing rights, government securities. CRR is the minimum percentage of a bank's deposit to be held in the form of co form रे liquid cash form रे.
हु इज द चेयरपर्सन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल चेयरपर्सन किए जीएसटी रो तो करेक्ट आंसर हम यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स द फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया किए फॉर्मुलेट करे फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया तो करेक्ट आंसर हम यार यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस What is the full form of NBFC, a type of financial institution? NBFC, a type of financial institution. The correct answer is non-banking financial company. Non-banking financial company. The salaries and allowances of the Speaker of Lok Sabha and Chairperson of Rajya Sabha are drawn from. तांकर salary और allowances को जगह रु आसे. The correct answer है यार Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of इंडिया कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भितर डिफरेंस मन रखिबे इंपोर्टेंट रहिबो ट्रेजरी बिल्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग इन इंडिया कहा द्वारा इश्यू करा जाए ट्रेजरी बिल्स तो करेक्ट आंसर है यार सेंट्रल गवर्नमेंट करेक्ट आंसर विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस रेगुलेट्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया हु रेगुलेट्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया तो करेक्ट आंसर विल बी SEBI Securities and Exchange Board of India. Where is the headquarters of International Monetary Fund located? IMF रो headquarter कोडी अछि Washington DC. What does IBC, one of the bankruptcy laws of India, stand for? IBC रो full form कोन? तो correct answer है यार IBC Insolvency and Bankruptcy Code. Insolvency and Bankruptcy Code. What is the full form of IDA? IDA रो full form कोन is a part of World Bank. The correct answer is International Development Association. International Development Association. What does NABARD and Apex Development Finance Institution in India stand for? NABARD रो full form कोन The correct answer is National Bank for Agriculture and Rural Development. National Bank for Agriculture and Rural Development. What is the full form of IBRD? An international financial institution. IBRD रो full form कोन फर्स्ट पार्ट बहुत बेसिक क्वेश्चन सब अछि ए क्वेश्चन रिपीट होवार चांस भी बहुत अछि तो करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट व्हिच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया ओल्डेस्ट तो करेक्ट आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE What is the full form of Exim Bank, a finance institution in India? Most important role play करे Indian economy रे Exim Bank. The correct answer है Export Import Bank of India. Which is India's first payment bank? First payment bank India रे कोटा Airtel Payments Bank. Which is India's first small finance bank? India रो first small finance bank कोटा The correct answer is Capital Small Finance Bank Limited. Capital Small Finance Bank Limited. The Sarvodaya plan was drafted by. Sarvodaya plan was drafted by. The correct answer is Jayaprakash Narayan. Correct answer Jayaprakash Narayan. An international organization WTO stands for. WTO रो full form कोन World Trade Organization. World Trade Organization. In India, the Venture Capital Fund is regulated by VCF is regulated by SEBI. ठीक अछि VCF is regulated by SEBI. Who is the regulatory authority for merchant banking in India? Who is the regulatory authority for merchant banking in India? Correct answer SEBI. ठीक अछि RBI रो फंक्शन SEBI रो फंक्शन मध्य माने तांको मध्य रे तांकर फंक्शन को नेकी मध्य बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुए पिला मानको ठीक नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया एस्टिमेट किए करे नेशनल इनकम ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर है NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FDI इन इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी FDI ना सुनिथिबे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय द कहा द्वारा रेगुलेट हुए RBI द्वारा ठीक अछि माउथर कहि रखुछि सेबी कोटा को रेगुलेट करे RBI कोटा को रेगुलेट करे ताको प्रिसाइजली मने रखिबे द गांधीयन प्लान वाज फॉर्मुलेटेड बाय whom
गांधीयन प्लान तो करेक्ट आंसर हम श्रीमन नारायण अग्रवाल श्रीमन नारायण अग्रवाल क्लियर नेक्स्ट हाउ कैन वी कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री हाउ कैन वी कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री करेक्ट आंसर हम डिवाइडिंग द कंट्रीज नेशनल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन डिवाइडिंग द कंट्रीज नेशनल इनकम बाय इट्स पॉपुलेशन ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिबा रुपे इज एन इंडियन डोमेस्टिक कार्ड स्कीम conceived and launched by कहा द्वारा NPCI National Payments Corporation of India who among the following wrote the book Planned Economy for India Plan Economy for India किए लिखिथिले तो करेक्ट आंसर हबो एम विश्वेश्वराय ठीक अछि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRR in economics टिके सम पूर्व कहली कैश रिजर्व रेशियो In India, the first 5-year plan was launched in the year. क्यों वर्ष फर्स्ट 5-year plan launch होइतला तो करेक्ट आंसर हबो 1951 In India, T-bills are short-term debt instrument issued by T-bills are short-term debt instrument issued by कहा द्वारा तो करेक्ट आंसर हबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Which among the following is the first bank that introduced ATM in India? First bank that introduced ATM in India तो करेक्ट आंसर हबो HSBC अच्छा HSBC बैंक रो फुल नेम कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिकि जणेबे Who conducts open market operation OMOS in India मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओपन मार्केट ऑपरेशन को नेकी ये कंडक्ट करे तो करेक्ट आंसर हबो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज हेडक्वार्टर्ड यार हेडक्वार्टर कोड अछि आरबीआई रो तो करेक्ट आंसर हबो मुंबई What is the full form of NPA in banking terminology? NPA रो full form कौन? NPA non-performing asset. Non-performing asset. Clear? Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation DICGC is a wholly owned subsidiary of कहारो subsidiary है? DICGC Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. तो correct answer है वो यार. Sorry. Reserve Bank of India. Who publishes All India Consumer Price Index for industrial workers? CPI for industrial workers. The correct answer is Labor Bureau. Correct answer will be Labor Bureau. To neutralize the negative impact of inflation, the Indian government provides dearness allowance to its employees dash a year. बसो केते थरो गवर्नमेंट दिए DA जोटा की कहउछ हमें dearness allowances. तो करेक्ट आंसर है ट्वाइस ए ईयर ठीक अच्छे रीजन कौन भी क्वेश्चन में मेंशन करा जायछि टू न्यूट्रलाइज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन द इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स डियरनेस अलाउंस क्लियर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज फॉर्म्ड बाय ब्रिक्स रो बैंक कोटा या तो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB व्हिच अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया का पाखे से अथॉरिटी अच्छी पावर अच्छी टू रेगुलेट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया तो करेक्ट आंसर है यार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइवेट आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक प्राइवेट आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक तो करेक्ट आंसर है यार इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन वर्ल्ड बैंक रो प्राइवेट आर्म who publishes the consumer price index numbers for agricultural labors in India CPI for agricultural labors the correct answer है यार labor bureau correct answer है labor bureau in India which of the following economic activities falls under tertiary sector ये तो कोटा tertiary sector रे आसे the correct answer है tourism आसे tertiary sector रे what is the full form of WPI in economics wholesale price index in India who releases the periodic labor force survey the correct answer about National Statistical Office
ए जगह लेबर ब्यूरो जदि ऑप्शन रे थांदा who has the authority to authorize non-bank entities to set up white label ATMs क्या पाखे से authority अछि to authorize non-bank entities to set up white label ATMs तो correct answer है Reserve Bank of India. Which of the following international organization releases the World Investment Report annually? Which of the following international organization releases the World Investment Report annually? The correct answer है Union National Conference on Trade and Development. UNCTAD. ठीक अछि. What is the full form of CPI in economics? Wholesale price index. जोटा जेमती कि WPI सेमती CPI होची consumer price index. Which of the following terms refers to buying and selling government securities by the Reserve Bank of India? ताकू कौन कुआ जे टिके सम पूर्व क्वेश्चन रो लैंग्वेज अलगा थिला. OMO को ऑपरेट किए करे RBI करे ए जगह रे क्वेश्चन टिके डिफरेंट देछि लैंग्वेज डिफरेंट तो करेक्ट आंसर कोन हबो ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO. What is the full form of NEFT in banking terminology? NEFT रो full form कोन तो करेक्ट आंसर हबो यार नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर. मु भाबुचे वीडियो आपनको एग्जाम पई बहुत इंपोर्टेंट रहइबो कारण रिवीजन पर्पज रे करछि आपण वीडियो थरे देखंतु किबा दिथरे देखंतु आपण काम रे निश्चित ही आसीबो. The Reserve Bank of India was set up on the basis of the recommendation of RBI. Set up हला कहा recommendation रे क्यों कमीशन रो तो करेक्ट आंसर हबो हिल्टन यंग कमीशन. हिल्टन यंग कमीशन. Which of the following committees recommended flexible inflation targeting in India? FIT क्यों कमिटी रो रिकमेंडेशन रे आसिला इंडिया को तो करेक्ट आंसर हबो उर्जित पटेल कमिटी. करेक्ट आंसर हबो उर्जित पटेल कमिटी. The Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India consists of how many members? The Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of India consists of how many members? The correct answer was 6 members. ठीक अछि. What is the full form of RTGS in banking terminology? RTGS. The correct answer was real time gross settlement. Real time gross settlement. Who fixes the statutory liquidity ratio in India? किए फिक्स करे statutory liquidity ratio? The correct answer है यार Reserve Bank of India RBI. What is the full form of IMPS in banking terminology? IMPS रो full form कौन? तार correct answer है immediate payment service. Immediate payment service. IMPS. What is India's first white label ATM? India रो प्रथम white label ATM कौन? Correct answer है IndiCash. Correct answer है IndiCash. Who among the following has the sole right to issue banknotes in India? Sole right to issue banknotes in India. RBI. The extended fund facility is a lending facility of. Extended fund facility is a lending facility of kaharo. The correct answer है International Monetary Fund. International Monetary Fund. Which city is known as the financial capital of India? That is Mumbai. The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation DICGC insures principal and interest up to a maximum amount of. DICGC insures principal and interest up to a maximum amount of 5 lakhs. ठीक अछि 5 lakhs. एबे सुधा 5 lakhs अछि. Which of the following sectors has the highest percentage of working population in India? को सेक्टर रे सबटो अधिक लोक काम करछन्ती तो करेक्ट आंसर हो प्राइमरी सेक्टर जेतो एतरे एग्रीकल्चर ऐड होची माने अंडर रे अछि एग्रीकल्चर. Who discharges its statutory obligation of being a banker to government of India? Who discharges its statutory obligation of being banker to government of India? तो करेक्ट आंसर हो RBI. DICGC is borne entirely by the deposit insurance premium paid to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation is borne entirely by the insured bank. ठीक अछि insured bank. India formally adopted
इंश्योर्ड बैंक माने कोन जानिछंती आरबीआई ऑफ इंडिया इंश्योर्ड डिपोजिटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंश्योर्ड बैंक कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे कमर्शियल बैंक को भी आमे कहि परिबा इंश्योर्ड बैंक ठीक अछि इंडिया फॉर्मली अडॉप्टेड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टार्गेटिंग एफआईटी इन द ईयर कमेंट बॉक्स रे कमेंट निश्चित करंतु मते जणांतु कि कोन आपनकर प्रॉब्लम को जगह रे आपन लैक करूचंती कोडा आपन जानिया चाहउचंती मु तापर कंसंट्रेट निश्चित करिवि ठीक अछि इंडिया फॉर्मली अडॉप्टेड फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टार्गेटिंग फिट इन द ईयर को वर्ष एक्सेप्ट माने अडॉप्ट कला तो करेक्ट आंसर बा 2016 रे which of the following articles of the Indian Constitution deals with the contingency fund of India को आर्टिकल रे मेंशन करा जायछि तो करेक्ट आंसर हबो 267 मने रखिबे 267 नाबार्ड फुल फॉर्म ऑलरेडी गोटे क्वेश्चन रे थिला नाबार्ड रो फुल फॉर्म कोन नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इज होली ओन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर हबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द इंटरनेशनल Covenant on Economic, Social and Cultural Rights is a multilateral treaty adopted by the UNGA in the year को वर्ष तो करेक्ट आंसर है यार 1966 1966 the term paper gold refers to कौन रेफर करे पेपर गोल्ड स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF which is India's first credit rating agency ऑप्शन गुडी मधुर कोटा इंडिया रो प्रथम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तो करेक्ट आंसर हबो CRISIL जार फुल फॉर्म होची क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड हु इज द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया Chairman of 15th Finance Commission of India. Correct answer NK Singh. Correct answer of NK Singh. Which among the following organization is responsible for measuring the GDP in India? Who measures GDP in India? The correct answer of NSO, National Statistical Office. The minimum amount to be remitted through RTGS is minimum amount kete remit kara jai paribo through RTGS. The correct answer is 2 lakhs. Correct answer 2 lakhs. The State Bank of India was nationalized in the year 1955. What is the weightage of the vote of the central government in the GST Council? Weightage of the vote of the central government in the GST Council. The correct answer is 1/3 of the total votes. 1/3 of the total votes. What is the period of second 5-year plan of India? टेन्योर केते थिला 5 वर्ष तो जानि छे को वर्ष रु को वर्ष जाय सेकंड 5-year प्लान तो करेक्ट आंसर हबो 1956 टू 1961 फर्स्ट 5-year प्लान स्टार्ट हला 1951 रु 1956 पर्यंत तापर 56 रु स्टार्ट हला 1961 सेकंड 5-year प्लान ठीक अछि व्हाट वाज द पीरियड ऑफ फोर्थ 5-year प्लान ऑफ इंडिया तो करेक्ट आंसर हबो 1969 to 1974 1969 to 1974 ठीक अछि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी तो पेटीएम हो फोन पे हो गूगल पे हो तो जगह रे यूपीआई रजिस्ट्रेशन समस्त करथिबे तो यूपीआई रो फुल फॉर्म कोन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस which among the following articles of the Indian Constitution deals with the finance commission ये आर्टिकल मेंशन करा जाय फाइनेंस कमिशन रिगार्डिंग तो करेक्ट आंसर हबो आर्टिकल 280 एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज ए लोन और एडवांस फॉर व्हिच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्ड ओवरड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन डैश इन रेस्पेक्ट ऑफ ए टर्म लोन क्वेश्चन को आउथर पढंतु एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस
A non-performing asset is a loan or advance for which the principal or interest payment remained overdue for a period of more than dash in respect of a term loan. तो correct answer हो 90 days. NEFT रो full form कौन in payment transaction? तो correct answer हो National Electronic Funds Transfer. National Electronic Funds Transfer. Who is the chairman of the Cabinet Committee on Economic Affairs that directs and coordinates the governmental activities in the economic sphere? Who is the chairman of the Cabinet Committee on Economic Affairs? The correct answer is Prime Minister of India. For who among the following the salaries and allowances are charged on the Consolidated Fund of India? The correct answer will be Deputy Speaker of Lok Sabha. Deputy Speaker of Lok Sabha. Consolidated Fund ru तांकु salaries and allowances दिया जाए. Deputy Speaker of Lok Sabha. तो ये थला 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स रो बेसिक क्वेश्चन सब थिला माने डीप नथिला किछि. तो केमति लागला कोन लागला कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके निश्चित जणाबे. फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करथिले सब्सक्राइब करके निजर सपोर्ट निश्चित देबे. वीडियो भल लागिथिले सांग मानको सहित शेयर निश्चित करिवे. तो वीडियोटी कंप्लीट देखिथिबारु धन्यवाद.